Okay. Good afternoon, everyone. छुट्टी तो नहीं, छुट्टी नहीं, ठीक है. Good afternoon, everyone. Welcome to the session. Okay, let's start. Am I audible? Please kindly update. Am I audible? Is everything is fine? Very good afternoon, all of you guys. Welcome to the session of the end game on digital circuits. So let's start the session. Before that, सभी लोग सेशन को लाइक करो. So we are back. थोड़ा सा डिले हो गया. Sorry for the delay. Okay. डिले मेरा मिस्टेक है, गलती मेरा है. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. मेरा सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम किया एंड जस्ट वन मोमेंट. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं. एक्चुअली क्या हुआ ना, आई थिंक अंकित सर का क्लास भी अराउंड में तो देखा 2 PM तक है. सो इसलिए मैं भी मैंने सोचा बिकॉज द क्लास इज गोइंग ऑन अप टू 2, सो थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट करने के लिए मैं आराम से शुरू कर रहा हूँ. इस बीच में मेरा कंप्यूटर में दिक्कत किया. सो दैट इज द ओरिजिनल प्लान. दैट्स व्हाई देयर इज अ डिले बिटवीन द डिले बिफोर माय स्टार्ट. ठीक है, चलो. गुड आफ्टरनून. लव यू विनोद. लव यू ऑल. और थैंक यू. चलो लेट्स स्टार्ट. सो द नया बैच तो शुरू हो रहा है अनअकैडमी पे. ऑलरेडी तो 28 पे एक बैच तो शुरू हुआ. दैट इज द उड़ान बैच. सो इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी यू कैन start your journey of the GATE preparation for 24 and 25 using these batches, the Udaan batch and Buniyaad batch. इसमें आपको सारे फैसिलिटीज मिलेगा. टॉप एजुकेटर का क्लासेस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस, डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स, बहुत सारे व्हाट वी कॉल मोर देन आई थिंक 5000 प्लस क्वेश्चंस यूनिकली डिस्कस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा. इतना सारे चीज आपको ये बैचेस पे मिलेगा एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस इन ए प्रॉपर वे. सो बिफोर द प्राइस रेज, इफ यू वांट टू सेव द टाइम, save money and get extra 10% discount on your subscription, you can use my code shankar10. ठीक है, you will be getting maximum discount on Unacademy subscription. कल तो स्पेशल क्लास ले रहा हूँ मैंने नेटवर्क डिजिटल के लिए. सब्जेक्ट वाला क्लास तो नहीं है बट जनरलाइज्ड इनपुट्स, हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम, इसके लिए एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ. आप लोग आना चाहिए तो मैं इस वीडियो का लिंक नहीं, चार्ट पे व्हाट वी कॉल लिंक को ऐड करेगा. यू कैन कम, आई विल पिन द लिंक सून. ओके, यू कैन जॉइन दैट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. So the first topic we are going to discuss is combinational circuits. As we discussed yesterday कल तो डिस्कस किया ना मैंने. कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट से शुरू करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल बच्चों को भी आसान होना चाहिए. सो इफ यू वांट टू सी द टोटल पीपीटी, बहुत सारे क्वेश्चंस लाया आपके लिए. ठीक है, अराउंड अगेन सेम लाइक yesterday आई मेड 40 क्वेश्चंस रेडी फॉर यू. एंड फॉर ईसी इलेक्ट्रिकल वाला बच्चों के लिए द okay PPT ends here. 31 questions are there for electrical engineering. The remaining 9 questions are exclusively for the ECE students. ठीक है, चलो let's start the session with the first question. So the first chapter of your syllabus, that is the combinational circuits. इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं सभी. Let's have the discussion about it. So first and foremost important point or important topic of the combinational circuit तो mux है.
मार्क्स में हर साल पे क्वेश्चंस तो आ रहा है, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, बिना मार्क्स का क्वेश्चन कोई पेपर ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लो, ईसी का इंजीनियरिंग ले लो, कोई भी। सो मार्क्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। इंटरनली व्हाट इज द मार्क्स? मार्क्स कंटेन्स मेनी इनपुट, सिंगल आउटपुट। बेस्ड ऑन द सिलेक्शन इनपुट इट विल सेलेक्ट वन इनपुट एंड इट विल बी गिविंग टू द आउटपुट। सो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसके अलावा आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पार्ट ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन, सर हाउ टू इंप्लीमेंट अ फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर यूज करके कोई भी फंक्शन आप इंप्लीमेंट करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए। सो इसमें another important most frequently recently 3 times they appeared in your examination, that is logic game, mux with delay wala question. So this comes under that category, mux with delay. So let's solve this question, guys. So chalo. Right, first question is ready for you. तीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ये पीडीएफ चाहिए क्या आपको? ये पीडीएफ से कुछ फायदा है तो, होता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो रेडी है डिजिटल के लिए। चलो, आई थिंक अंकित सर ने 5 घंटे की क्लास ले लिया। Right. So here you see the propagation delay of the XOR gate and AND gate and the mux shown in the figure are 4, 2 and 1 nanoseconds. XOR gate is 4 nanoseconds, AND gate 2 nanoseconds, AB 2 nanoseconds, mux 1 nanosecond. ठीक है, चलो शुरू करते हैं अभी। If all the PQRST inputs are simultaneously held constant, okay, so you have given the inputs all of them at the same time. सारे inputs एक ही बार दिया तो कितना टाइम लगेगा आपका आउटपुट आने के लिए? So that is the maximum propagation delay of the circuit. So 6, 3, 7, 5 तो दिया, ठीक है। 9 - 1 बोल रहा है, ठीक, 9 to 1, ओके ओके, क्लास का टाइमिंग, ठीक है। चलो 6 बोल रहा है, मैं भी ये बोल रहा हूँ आकाश, ठीक है। 2-3 लोग पूछ रहे हैं सर पीडीएफ चाहिए, इसलिए मैं आई एम आस्किंग दैट। कोई दिक्कत नहीं, 6 दे रहा है, ठीक है। चलो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। फर्स्टली हियर दिस इज द सिलेक्शन इनपुट, दिस इज द सिलेक्शन इनपुट। हियर दिस इनपुट इज इक्वल टू 0। ये इनपुट 0 रखेंगे तो क्या होता है? बिकॉज मक्स में दोनों इनपुट्स एक ही बार सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, इधर आई नॉट और आई वन विल, एनी वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड एट ए टाइम, ठीक है। मैंने t इक्वल टू 0 रखेंगे तो हियर दिस लाइन विल बी सिलेक्टेड हियर। सो आपका इनपुट आने के लिए PQRST एक ही बार दिया तो दिस विल कम एट 4 + 1, 5 नैनो सेकेंड्स में ये इनपुट आएगा। बिकॉज दिस इज 0, इवन दिस कम्स, कोई फायदा नहीं होता है ना, क्योंकि इट विल सेलेक्ट दिस ओनली, सो विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड। सो इसके हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इज ओनली 2 नैनो सेकेंड्स। सो रिपीट, चलो listen here, what I am saying is when t equal to 0 this will be selected and it will be given here, but ये t 0 है ना, इसमें दोनों के बीच में कोई इन्वर्टर तो नहीं है, so only it will select this only, so directly 2 nanoseconds is required time for this and another 1 nanosecond इसका आउटपुट आने के लिए it is not depending on the other marks पे डिपेंड नहीं हो रहा है, so it requires 3 nanosecond of time when t equal to 0. So the other possibility for the t क्या होता है सर? t equal to 1. So अभी t equal to 1 वाला एग्जाम्पल ले लो, 1 वाला एग्जाम्पल ले लिया तो t equal to 1 पे कितना टाइम लगेगा? here 2 nanoseconds. How much time you will get here? 2 + 1, 3 nanoseconds. How much time you will get here? 5 nanoseconds. Okay,
and when t equal to 1, this mux requires 1 nanosecond. So when t equal to 1, to get the output, it requires 6 nanoseconds. 3 और 6 पे कितना, which one is the minimum possibility, what is the maximum delay you can get is 6 nanoseconds. Don't blindly add all of them, which will not give you the right answer. ठीक है, चलो let's move for the next question. So a combinational circuit using 8x1 mux is shown in the figure. The minimized expression for Z is, what is the output expression Z? This is also a mux based question. मैं तो बहुत सारे mux based questions ही ले लिया क्योंकि बहुत सारे questions तो आ रहे हैं mux based only. So 3-4 questions मैंने attach किया. So आप लोग तो try कर लो, मैं parallelly I will draw the K-map के लिए diagram draw कर रहा हूँ, ठीक है? Okay, here. Any answer? Any answer? Good afternoon. Okay, anybody here any answer? Please comment. नहीं है तो I'll answer it. ठीक है? I am ready to answer. One is the answer. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चलो let me solve this question. Firstly, mux का inputs are A, B, C. Mux का inputs are A, B, C. So sum of the minterms 0, 1, 2 and 6, 7. Sum of the minterms 0, 1, 2, 6, 7. And here C bar comes here. Okay, इसको finally C bar add करना चाहिए. ठीक है, वो तो add करेगा. Firstly ABC क्या है? Sum of the minterms 0, 1, 2, 6, 7 नहीं है ना? 6. So sum of the minterms 0, 1, 2, 6. It will mark a pair. It will make a pair. What is the answer? What is the answer आपको? A bar B bar plus B C bar. ठीक है, A bar B bar plus B C bar. Now इसको आपने क्या करना? This is plus C bar add करो. Plus C bar add किया तो क्या होता है सर? This is the final answer. So आप C bar so A bar B bar plus आप C bar common ले लो. 1 plus B will be 1. So A bar B bar plus C bar is the final answer. Very good, perfect. A bar B bar plus C bar, that is the right answer. Very good. Chalo, next question. So here there is a question. Please give a try. MSQ. Okay. Select which of the following are correct. 1, 2, 3, 4 में तो 4 options दिया, 4 में 1 सर है, 1 नहीं तो 2 है, 3, 1, 2, 1, 3, any whichever is correct you select that. That is the MSQ. ठीक है, so 3 करेक्ट है तो 3 ले लो, 4 करेक्ट है तो 4 ले लो, कुछ भी करेक्ट है तो कुछ नहीं सेलेक्ट कर सकते. ठीक है, so please tell me what is the right answer here. So टाइमर तो शुरू कर रहा हूं अभी, तो ट्राई करो. It is a MSQ, multiple select question. So please try.
3 4 बोल रहा है, 2 4 बोल रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यू सी हियर, सी विल कम हियर ना, सी बार, यू राइट दिस एक्सप्रेशन, इसको सी बार ऐड करना, दैट इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? सम ऑफ द मिन टर्म्स 0126 प्लस सी बार, and this part will give me a bar b bar plus bc bar ना, plus c bar, इसमें c bar कॉमन ले लो, 1 plus anything will give you 1, so a bar b bar plus c bar is the answer, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉर द दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन पे फर्स्ट लेट मी फाइंड द एक्सप्रेशन, ठीक है। So s equal to 0, when s equal to 0, what do you get? S bar x bar plus sx, that will give you a x nor with b, okay, or x y bar x bar plus yx, that will give you x nor with y. Let's take it as some k. If you take that k here, what is the answer you are getting here is k bar into s, when s is 0 you are getting z na, z bar plus kz, that will give me k x nor z, ठीक है। So listen here, so what is k here? x nor y, x nor z, here a b c ले लिया मैंने ऑप्शंस में, कोई गलत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, a or x whatever it might be, ठीक है, डोंट वरी। so this is 100% correct, ठीक है। now if you analyze this by k map, you get this is equal to ax or bx or c, that is sorry xx or yx or z, that is equal to x xor y XOR with Z, because XOR operation is an associative property. XOR operation satisfies associative property. So and so this is what is the condition is all these three are correct. Fourth one is wrong. Okay, you check here if you want to cross check the answer. This will give you sum of the min terms 1 2 4 7, and this will also give you the same sum of the min terms 1 2 4 7. Sir, how you say it is correct sir? ये तो standard है, आपको दिक्कत है तो क्या करना चाहिए? I will tell you, listen here. I'll tell you, listen here. If you have doubt whether it is correct or not, you take x y z, ठीक है, x x और y ले लो यहीं पे, और x x और y x और with x nor x nor y y x nor with z, ठीक है। So here ठीक है, चलो, when x and y are different same, you get x nor equal to 1, same different 0, different 0 same 1। नाउ ये दोनों को x नॉर करके आंसर लिखो। 0 1 का क्या होता है सर? 0 1 का 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, सॉरी 0 0 का क्या 1 1, सेम है तो you will be getting 1, अलग है तो 0। So it is nothing but you see for the first sum of the min terms 1 2 4 7. This is true for AX or BX or C also. As you know, XOR gate is associative. You can also do AX or B first and XOR with C. All will give you same answer. So here all the options are right. 1 2 3 are right. Fourth one is the wrong. What is this? This is sum of the min terms 0 3 5 6. Okay. Chalo, let's move further. Here this gap is, this bracket is required, okay, to understand that first we do x or y and z. This is like this. Got it? Chalo. Thank you. So 4 is the wrong answer. 4 is the wrong answer. Right. This is another question. I think it is visible. कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, ठीक है। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी इफ यू हैव अटेंडेड माय रेगुलर क्लास में आप लोग तो ऑलरेडी किया, बट इट इज ए गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। सो
एक मिनट. सो आपने मक्स यूज करके कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करना चाहिए तो क्या करना, टेक द के मैप, इट मेक्स इजी टू नो दैट. Okay, then according to the ABC you can write, take the inputs and fill it. It is the easiest way. So chalo, let's see here. Come on, anybody here, please comment. Come on here. 10 seconds more. हो गया टाइम. Right, see here, you have 1 by 8 demux is to be implemented. So this is the question based on the demultiplexer. So please understand the working of the demultiplexer. S2, S1, S0 are the selection inputs, for example. Okay, demux mein. Okay, so they must be all zeros to all ones. First understand how demux will work. इसके बाद we can understand about this problem. इसके पहले let's quickly revise demux. When s not equal to 0 0 0 to 0 0 1, okay, what happens is here y naught will be equal to 1. Here y1 will be selected in the output. I mean, क्या हो रहा है in, अरे so here y naught is given with I. Here y1 is given with the input, y2 is given with the input, y3 given with the input, y4 given with the input, 5 given with input, 6, y7, like that. Based on the selection input, the input whatever you have based on the selection lines, the input given information will be given to any one of the output out of the 8 outputs. So you can see here, when s equal to 0 and s equal to 1. Okay, so here what's happening, when s is 0, y0 to y3 will be selected, and s is 1, y4 to y7 will be selected. This is how demux will be working. This is my required condition. Now come to the question. Question pe kya hai bhai, 1 by 8 demux with the data input d in, address inputs s0, s1, s2 are s0 as the LSB, y0 to y7 are the 8 demultiplexed outputs designed using 2 by 4 decoders. मैं 2 by 4 decoder use करके demux को डिजाइन किया, ठीक है. So D in and S0, S1, S2 are connected to PQRS. So D in, S0, S1, S2 are connected to the PQRS, but not be in the same order. They can be in any order, but what is that particular order you need to connect is to be find out by us. ठीक है, very simple. Firstly, there should be a line which can select first part or second part based on that particular line is 0 or 1. You can see here enable input is active low. Here the input which is common for both of them, you see here Q. When Q is given through inverter here, so when Q is 0, when Q is 1, for example, this will be 1, 1 plus anything is 1 na, 1 will come here, 1 bar is 0, 0 and P, you get P here. What is the meaning of this? When Q is 1, the first demultiplexer is disabled and the bottom demultiplexer is enabled. The same way, when Q is 0, what happens? You see here 0 into 0 plus P, P will come here, 0 bar 1 will come, 1 plus anything is 1, this will be disabled. So Q is selecting, based on Q, I am selecting whether first decoder or second decoder, that is y0 to y3 or y4 to y7. So I can say my S2 is nothing but Q. And these two bits, iska
A1 A0 जो है ना, these are connected to S1 S0. So S1 is S R, S1 S0 are S and R. So बाकी इनपुट क्या है भाई, बाकी इनपुट D in is given to P. So बाकी P QSR हो गया ना, so PQ RS ले लो, P will be D in, Q will be S2, R will be S0, S will be S1. ठीक है, this is the order we should give PQRS. So D in S2 S0 S1. That is the answer. So let's move for the next question. So digital पे हमेशा ये होती है, question is very lengthy. Many people will feel disconnected because they don't understand the meaning of the question carefully. If you understand the meaning of the question carefully, you will be able to answer the question undoubtedly. So इसलिए please read the question carefully. You will be able to answer it undoubtedly easily. Okay? चलो, let's go for the next question. So there is a question like this, little lengthy question again. So please give a try and tell me your answer. Tell me your answer. ठीक है, this is based on the arithmetic circuits. A half adder is implemented with XOR gate and AND gate. Full adder is implemented with 2 half adders and 1 OR gate. ठीक है, हाफ एडर का अंदर क्या होता है सर, एक एक्सऑर गेट होता है, एंड गेट होता है, आपको पता है. ठीक है, एंड फुल एडर के अंदर क्या होता है, हाउ द फुल एडर इज इंप्लीमेंटेड, इट इज नॉट डायरेक्ट फुल एडर, दो हाफ एडर और एक और गेट लेके फुल एडर को इंप्लीमेंट किया. इस वाला केस में द प्रोपगेशन डिले of the XOR gate is twice the propagation delay of AND gate or OR gate. So that is 1.2 microseconds is for AND gate and OR gate. The 4-bit triple carry adder is implemented using 4 full adders. What is the total propagation delay? It's a very good question and most frequently repeated model भी है. So आप लोग तो try करके आंसर बताओ. So please try this question guys. इलेक्ट्रिकल बच्चों ऐसा मत सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो हमको इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आसान क्वेश्चन से पूछते हैं डिजिटल पे, ऐसा नहीं भाई. एनीथिंग कैन हैपन, यू मस्ट बी रेडी फॉर एनीथिंग. ठीक है, सो प्लीज गिव ए ट्राई, प्लीज गिव ए ट्राई. एक काम करो आप लोग तो कमेंट करो, हाउ मेनी ऑफ योर ईसी एंड हाउ मेनी ऑफ योर इलेक्ट्रिकल, एक बार चार्ट पे कमेंट करो यार. विनोद तो बोल रहा है आंसर इज 12. ठीक है, बाकी लोग बताओ आपका आंसर क्या. मैं वेट कर रहा हूं, आपका आंसर बताओ. Whicher I don't think there will be any problem wearing a shoe. ठीक है, don't carry inside the shoe, वो तो allowed नहीं. ठीक है, wearing shoe is allowed but carrying something inside the shoe is not allowed. ठीक है, ईसी वाला बच्चों भी हाई, ईसी का फ्यू एंड इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा. ठीक है, 33.6 भी बोल रहा है. ठीक है, लेट्स गो. ठीक है, फर्स्टली so this is one half adder. ठीक है, like this we have taken another half adder. ठीक है, चलो, another half adder is taken and output of this is given as input to this. So if you give A and B, you get A XOR B and AB. Now A XOR B
और सी दिया तो व्हाट इज द आंसर? ए XOR B XOR विथ सी, ठीक है, एंड ये भी, और हियर व्हाट डू यू गेट? ए XOR B इंटू सी, ये दोनों और गेट को दिया तो आपको व्हाट वी कॉल ए बी प्लस ए XOR B इंटू सी, दैट इज योर कैरी एंड दिस इज योर सम, ये आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इंटरनल सर्क्यूट ऑफ द फुल एडर, दिस इज हाउ ए फुल एडर इज मेड। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो, चलो लिसन हियर। ओके लिसन, डोंट वरी। नॉर्मली इस वाला सर्क्यूट पे, अरे क्या हो, चलो इस वाला सर्क्यूट पे एग्जामिनर इज सेइंग दैट व्हाट इज द कंडीशन गिवन बाय एग्जामिनर? जस्ट ए मोमेंट। ओके हियर क्या बोल रहे हैं? 1.2 nanoseconds is the time required for AND gate and OR gate, and XOR gate के लिए twice. So here 1.2 ले लो, 1.2, 2.4, 2.4, 1.2, 1.2। सो एक कैरी आने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है? कैरी इज इक्वल टू यही से यही तक 2.4, सो 2.4 में ये इनपुट अप्लाई किया तो अनदर 2.4, इसके लिए 4.8 इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सम, एंड ये 2.4 में अप्लाई किया, ठीक है, and carry is there, then 2.4 plus 1.2, how much? 3.6 plus 1.2, what is the answer? 4.2, 4.8. So here TC is equal to TS equal to 4.8. One full adder में if A, B, C are applied, how much time it is requiring to generate the sum and carry? It is requiring 4.8 nanoseconds. But ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, जनरली हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n-1 times TC plus मैक्सिमम ऑफ TS कामा TC। दिस अप्लाई किया तो एग्जामिनर ने बोला 4 बिट पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल एडर में 4 - 1 into 4.8 प्लस मैक्सिमम ऑफ 4.8 कामा 4.8, ये तो 100% रॉन्ग आंसर है। मेनी पीपल विल कमिट दिस मिस्टेक, ठीक है। सो 19.2 आंसर देती है भाई, गलत आंसर है, गलत आंसर है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? 4.8, 4.8, 19.2 नैनो सेकेंड्स तो गलत आंसर, ठीक है। एनीबडी गॉट दिस आंसर? या ऑप्शंस कमेंट्स में देखो, 99.2 इज देयर, ठीक है, ओके। अच्छा विक्टर, ऐसा कुछ नहीं, गेट पे तो नहीं होता है ऐसा, ओके, डोंट वरी। So this is wrong answer, this is the wrong answer, I know many people will commit this mistake, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो गलत है भाई। So क्या करना फिर, क्या करना फिर? चलो भाई, listen here carefully, listen here carefully, ये तो गलत है, let's move for the next. So don't apply this formula, ये formula, why I am taking this question is I want to tell you one thing, ये वाला formula तो apply मत करना चाहिए। कब मत करना चाहिए सर? when internal circuit is given by the examiner, so that is the worst case delay when internal circuit is not known, but internal circuit diya to don't apply this formula, you should find it according to the internal circuit. And another case where you cannot apply this formula is when input value is given. In these two cases don't apply this formula. When input values are given or internal circuit is given, don't apply it.
ये दोनों नहीं दिया तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर सर बताओ, चलो लेट्स डू इट, इट इज नॉट एज सिंपल एज दिस, सो इसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज यस, यू रिक्वायर 4.8 नैनो सेकेंड्स टू गेट दिस, एंड इसके लिए 4.8 नैनो सेकेंड सही है, कोई डाउट ही नहीं है। चलो भाई लिसन, now if you take this as the first adder, this as the second adder, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। So firstly A and B are commonly applied for all the full adders, so it requires the same 2.4 nanoseconds to get this output and the same 1.2 nanoseconds to get this output, ठीक है। एंड इसके बाद ये इनपुट तो रेडी है भाई, ये सारे गेट्स तो 1.2। अभी तो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये भी इज अप्लाइड इनिशियली, सो 2.4 नैनो सेकेंड्स में ये इनपुट तैयार होके वेट कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है भाई, सी के लिए वेट कर रहा है। सी कहां से आना चाहिए, ये वाला एडर से आना चाहिए। सो हाउ द फुल एडर इज मेड, यू नो, one adder output is connected to another adder, output is connected to another adder, like this we will be giving the carry. I hope you know that. So this is given as the, this will be given as the carry input. To this, so this carry input is applied at 4.8 nanoseconds. So once you apply carry input, this part requires 2.4, so you get the output at 4.8 plus 2.4. When will you get this? After applying the carry, this part is 1.2, this part is 1.2, because this input is taken by two people na, this fellow also taking, this fellow also taking, so 4.8 plus 2.4. So how much time is required, 7.2. So forget about this 7.2. Now at 7.2 I will apply to the next full adder, then it requires the time of 7.2 plus 2.4, 9.6. At 9.6 I'll give this carry to the next full adder, that requires 9.6 plus another 2.4. The final answer will come at 11 nanoseconds. You should check the answer when both sum and carry are readily available. Here last stage may we should check sum and carry both should come, but here both of them taking same time, no need to worry about it, okay. So here what happens, after the first stage, if you have n minus 1 number of stages, n minus 1 into 4.8 into 2.4 into 3, okay, that is the answer. So 4.8 plus 7, 12 nanoseconds, 7.2, 12 nanoseconds, ठीक है। बी केयरफुल, डोंट ब्लाइंडली अप्लाई द फॉर्मूलाज, ठीक है। कोई आंसर दिया 12 नैनो सेकेंड्स, पर्थ जैन तो दिया, वेरी गुड यार, 1.2 मिली सेकेंड्स, ओके। सो इज इट फाइन नाउ, शैल वी प्रोसीड फर्दर? बी केयरफुल यार, ये वाला फॉर्मूला गलती से अप्लाई किया तो मार्क्स चलेगा, हम तो एग्जाम के बाहर आए के यू फील दैट 2 मार्क्स तो आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो सेम मॉडल का एक क्वेश्चन में डाल दिया, ठीक है, इंटेंशनली दिया, ये क्वेश्चन तो सभी लोग कर सकते हैं अभी। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं देता हूं, नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो इसके लिए 30 सेकंड तो मोर देन इनफ, ठीक है, 30 सेकंड भी ज्यादा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, नो डाउट, अनडाउटेडली यू कैन सॉल्व इट। प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। आंसर दे दो यार, क्या हुआ इतना टाइम, आंसर प्लीज। Very good, Pradeep, perfect. Here n is how much, 16, n minus 1 times
carry plus maximum of 12 comma 15, 180 plus 50, 195. ठीक है, because इसमें you don't know ये values, bit values, you don't know the internal circuit, you can apply here this formula. ठीक है, now it is clear when you can apply, when you cannot apply this formula. चलो let's move for the next question. ये भी बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक सर्क्यूट्स ओनली, बट मार्क्स भी इंक्लूड करके अर्थमेटिक सर्क्यूट. मुश्किल वाला क्वेश्चन तो नहीं है, आसान का क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करो, गिव ए ट्राई. मे बी इसमें एमएसक्यू जैसा दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन सेम है. ओके, एक ऑप्शन तो राइट करो, टिक करो. So x and y are the inputs of the difference. What is your difference? X XOR with y. What is the borrow? X bar y. ठीक है. So here s is given as x ना. s 0 है तो y आ रहा है, x bar y आ रहा है, ये तो 0 है ना permanently. x plus x y. Next here x into y bar, sorry x bar into x0 है तो y आ रहा है, x1 है तो y bar आ रहा है. That is x XOR with y. Because the characteristic equation is s bar I naught plus s into I1 is the 2/1 marks. So maybe C is also same option. Don't worry, both can be right, no problem. So 7th question हो गया. 8th question, question number 8. ये भी आसान question है. So please give a try. So please try this question. So basically कॉम्बिनेशन में आपको मार्क्स डी मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते, नहीं है तो अर्थमेटिक सर्क्यूट से आ सकते, नहीं है तो देयर इज सम लॉजिकल सर्क्यूट्स लाइक कंपैरेटर, 1 बिट कंपैरेटर, 2 बिट कंपैरेटर एटसेट्रा. इसके अलावा दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम डिकोडर एंड एनकोडर. दैट फिनिशेस योर सिलेबस इन फैक्ट, बट मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस तो मार्क्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज एडर एंड सबट्रैक्टर, अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन. सो इस वाला क्वेश्चन क्या है भाई? Here the answer is A B bar. Okay, next here A bar B. Here for making, don't write this expression. आसान काम क्या है भाई? एंड गेट को बबल्ड और जैसा लिखो, नैंड को बबल्ड और जैसा लिखेंगे तो ये दोनों चलेगा, ये दोनों चलेगा. देन इट इज ए बार बी बार, ये तो ए बी. सो ए बार बी बार प्लस ए बी इज नथिंग बट ए एक्स नॉर बी. इफ यू नो दिस, इट इज कॉल्ड 1 बिट कंपैरेटर. ये क्या है भाई? 1 बिट कंपैरेटर. If you take AB 0 0 0 1 1 0 1 1, A greater than B is A less than B, A equal to B when both the bits are equal. This is A X nor B, this is A bar B, this is A B bar. ठीक है. So इट इज ए ग्रेटर देन बी इंडिकेट कर रहा है, ये तो ए इक्वल टू बी, ये तो ए लेस देन बी इंडिकेट कर रहा है. सो इट इज नथिंग बट ए 1 बिट कंपैरेटर सर्क्यूट. मेनी पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन सी. चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, सेम क्वेश्चन दो बार आया. चलो कोई दिक्कत नहीं. अरे यार ऐसा क्यों हुआ? मैं दूसरा क्वेश्चन लाना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो गलत प्रिंट हो गया. आई विल गिव यू प्रिंटिंग मिस्टेक.
in a 2-bit comparator, determine number of times A greater than B occurs. This is given in one of the papers, so गलती से क्वेश्चन 2 बार आया, इसलिए मैं क्वेश्चन को रिप्लेस किया. चलो, how many times it happens? How many times it happens? I hope you know, you are my students, I hope you know this answer. कितना बार होता है भाई? Listen, A greater than B will occur if you have sum of the minterms. See here, when you have 0 1 0 0, 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 0 1 0. That is sum of the minterms 4 8 9 12 13 14. 6 बार हो रहा है, ठीक है. A is this, B is this. How many possibilities are there for this? 6 times. Next question. ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो कर सकते हैं. I hope you know the answer. Question number 10. So total 40 questions. We are in the 1/4 part of the total. ठीक है, around 45 minutes हो गया. Like yesterday, before 5 the class will be completed. Six is the right answer. Very good. Time up. ये तो आसान क्वेश्चन है. Listen, when v equal to only if the input is valid, when the input is valid you get 1, when input is invalid you get 0. Okay, fine. Now listen here, when d3 is 1, remaining can be anything. What is the output you are getting is 3. When d2 when d2 is 1 but d3 must be 0, d3 is not present, d2 is present, and d1 d0 can be anything, you get 1 0. Similarly, when d3 d2 not present, d1 is present, you get 0 1. When all of them not present, d0 is present, you get 0 0. Least priority. So this is nothing but a priority encoder. Everybody might know the answer. ठीक है, 4-bit priority encoder. चलो, next question. So please give a try here. When input is I13, what is the output is the simple question. Don't read that lines and all. It is very simple. You have A, B, C, D here. ठीक है. So this is the dmux and this is my mux. Okay, mux का output तो dmux को connect किया. So when the input is 13, what is the output is the question. If the input is 13, what is the output? When the input is 13, what is the output? Please comment your answer. अगर input 13 है तो output क्या होता है? Input 13 है, मेरा output क्या? Comment please.
कमेंट, ठीक है, टाइम ले लो। टाइम अप। एनीबडी हियर कमेंटेड आंसर 2 बोल रहा है, 8 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, लेट्स सी। सो 13 का मतलब क्या? आपका ए बी सी डी क्या होता है? 13 का मतलब क्या? 13 का मतलब ए बी सी डी क्या? 1101। सो ए बी 11 B 1 D bar means 0, okay, and here C is 0, A is 1. 0 into 1 is 0 na, whole bar is 1. 0 bar 1. 1 into 1 1. 1 XOR with 1 0. So what is the input it is going? Tell me. When the input is 13, I13 means 1101 is given. Okay. So here, what is the input? It is going to the demux. Demux mein A XOR B will be 0. XOR B because both are same. A into B, sorry, B into D 1. D bar, okay. D bar is D1 hai na. D bar is 0. 0 bar will be 1. Here D will come. D bar whole bar D will come. A into C whole bar, A into C, 1 into 0, 0 whole bar will give you 1. So, what is the output? I7. I7. 7 is the right answer. Shriya, Sona, Arun, Ransom, Vinod, Ahmad and Kumari, right answer. So, let's move for the next question. Another question based on the decoder. This comes under the implementation of the logic circuit using the decoder. So, please give a try. Yeah, please tell me the output function F. F क्या है भाई? F क्या है? I hope if you remember my class 3 to 8 decoder implementation में this is a active low output case. Active high का मैंने बताया और गेट लेना चाहिए. For SOP, for POS we should use bubbled AND gate, that is NOR gate. For active low I told two cases. AND gate for POC, NAND gate is for SOP. So if you remember that you can answer it easily. So please try this question. गिव ए ट्राई एंड कमेंट में तो मीनवाइल डायग्राम ड्रॉ करता हूं. चलो हियर एनीबडी? अरे मिन टर्म्स बोल रहा है, ठीक है, चलो एक्सप्रेशन बोलना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हियर this is equivalent to bubbled OR gate. ये वाला बबल ये कैंसिल हो जाएंगे. So here what is the answer is sum of the min terms 0, 1, 3, 4, 7. Sum of the min terms 0, 1, 3, 4, 7. Okay.
You can also take this pair according to, so B bar C bar VC plus A bar V, बस ठीक है, राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड हियर, डिकोडर का इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चंस तो आ सकते हैं. नॉर्मली नॉर्मल डिकोडर दिया तो एसओपी और गेट, पीओएस नॉर गेट. एक्टिव लो आउटपुट दिया तो पीओएस एंड गेट, एसओपी नैंड गेट. ओके, चलो लेट्स मूव. एनी प्रॉब्लम? 2, 5, 6 are the max terms here. Okay, right, let's see. So now that will finish your first part of the this one. 12 questions to ho gaya, first chapter of your discussion is done. For ye electrical people, 2 more chapters are left over, that is only sequential circuits and data converters. इससे आपका सिलेबस तो हो जाएगा, आप लोग तो जा सकते हैं. ईसी वाला बच्चों तो you should wait for little more time. ठीक है, चलो now let's enter into the new zone. The next topic, sequential circuits. ठीक है, the next topic, sequential circuits. Let's start. चलो ट्रिक चाहिए. Decoder normally active high output, okay, and it will implement SOP using OR gate, right. केवल ये लाइन याद करो, बाकी तो छोड़ दो. You don't remember anything else, no problem. Okay, you just remember this, बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, so if you remember this sufficient. Now listen here. If I ask you POS, don't remember anything. You remember SOP का R है, so POS का क्या है भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो NOR. लॉजिक एटसेट्रा में तो ऑलरेडी बताया, ये तो मिन टर्म को मैक्स टर्म कन्वर्ट करने के लिए बबल्ड इनपुट एंड गेट लेना चाहिए, सभी तो छोड़ दो अभी. ठीक है, शॉर्टकट के लिए. सिमिलरली एक्टिव लो आउटपुट, ओके, SOP POS. हियर आप ये याद करना, एक्टिव लो दिस विल रिप्रेजेंट मिन टर्म्स सिग्मा, दिस विल रिप्रेजेंट मैक्स टर्म्स. एक्टिव लो मीन्स 0 ना, एक्टिव हाई मीन्स 1 ना, 1 विल रिप्रेजेंट मिन टर्म्स सिग्मा. सो ऑर गेट लेना चाहिए एसओपी के लिए. पीओएस के लिए क्या, इसका इन्वर्टर ले लो. ठीक है, सिमिलरली एक्टिव लो आउटपुट मींस आउटपुट इज 0. आउटपुट 0 का मतलब क्या, मैक्स टर्म्स. मैक्स टर्म्स का मतलब क्या, पीओएस. पीओएस मींस यू शुड टेक एंड गेट, बिकॉज पीओएस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ना पाई. एसओपी विल बी, इससे याद करो इसका इन्वर्शन नैंड. ठीक है, सो इफ यू रिमेंबर दिस लाइन सफिशिएंट, इफ यू रिमेंबर दिस लाइन सफिशिएंट, ये तो इसका इन्वर्शन है. ये याद करना, कैसा करना भाई, हियर active high में output is 1 means min terms it is representing, so sigma. Here it is representing max terms, it means pi. Okay, that is how you need to remember. चलो A to D D to A करते हैं भाई sequential के बाद. चलो sequential पे जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन तो आया आपके लिए. चलो लेट्स स्टार्ट विद द sequential circuits. फ्लिप फ्लॉप में फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट हो रहा है, सो तुम जाओ. रेडी?
that worst case delay is only for parallel adder circuit when internal circuit is not provided, and what is that, input bits are not specified. Parallel adder circuit में only we will apply that. Chalo, let's move for the next. So consider the logic circuit with the input signal test. Test is the input signal shown in the figure. All the gates in the figure shown have identical non-zero propagation delay. The signal test which has a logic low switch it to high. So ये मैं 0 से 1 को change किया, ठीक है. Here you give t, you get t bar, t, फिर t bar आएगा, ठीक है, and दोनों को NAND कर रहे हैं. So your test signal is made like this. Now test bar signal will be having थोड़ा सा delay के बाद some 3 TPD delay is there. delay के बाद invert हो जाएगा, ठीक है. ठीक है, इतना डिले होता है, इतना डिले के बाद इट विल बी उल्टा, इतना डिले के बाद उल्टा हो जाएगा, ठीक है. नाउ ये दोनों NAND ऑपरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है. सो 0 into 1, this is 0 1, 0 into 1 is 0, whole bar is 1, 1 into 1 1, whole bar is 0, and again 1 into 0 0, whole bar is 1. So what is the meaning? It is generally used to generate the edge triggered pulse. Okay, that is fine. Now it pulses from high to low, again it will go back to high. Okay, it will go from high to low, again go back to low. Why this signal is discussed in sequential circuits? Because the flip flop का क्लॉक इनपुट को ट्रिगरिंग अप्लाई करने समय पे लेवल ट्रिगर्ड इनपुट को एज ट्रिगर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज दिस सॉर्ट ऑफ सिग्नल्स टू डिटेक्ट द एज, ठीक है. सो दैट मेरे रेगुलर क्लास में मैंने डिस्कस भी किया. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वेरी गुड यार, वेरी गुड. चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. असली क्वेश्चन तो आया, मेरा पूरा बोर्ड फिल किया मैंने, ठीक है. सो आप लोग तो ट्राई करके आंसर दे दो. पूरा पेशेंस होना चाहिए टू रीड दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर. 1 मिनट टाइम लगेगा टू रीड द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है. चलो मैं खुद से पूरा टाइप भी किया आपके लिए सो दैट इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, ठीक है. सो प्लीज टाइम. ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन. पेशेंस तो चाहिए डिजिटल पे, पेशेंस तो हमेशा अप्रिशिएटेड. This question can be asked in one line also. Sometimes the questions which comes very small, जैसा एक लाइन पे क्वेश्चन आती है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन के चांस है एंड मोर डिफिकल्ट भी हो सकते हैं. बट दिस मच लेंदी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो हमेशा आसान होता है. वाई आसान होता है सर? बिकॉज मोर इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द एग्जामिनर हियर. ओके, सो साइड प्लीज बोल रहा है, ठीक है. मैं साइड जा रहा हूँ. देखो भाई, नोइंगली अनोइंगली हमारा 1 घंटा तो हो गया क्लास पे.
चलो, a positive edge triggered flip flop is connected to a positive edge triggered JK flip flop as shown. Okay, the output of the D flip flop is connected to both the JK inputs. Okay, so let's first draw. Right, listen here. A positive edge triggered flip flop is connected to the positive edge triggered, sorry, here D D flip flop is connected to the positive edge triggered JK flip flop. Okay, the Q output of the D flip flop is connected to both the inputs of J and K. So इसका Q लेके दोनों को commonly connect करो. And the Q output of JK flip flop is connected to the input of the D flip flop. Right. Initially, the output of the D flip flop is set to 1. Initially, this is equal to 1, and the output of the this one is 0. Okay. Which of the following is the sequence including the initial state generated at the output Q of the JK flip flop for the connected to the free running common clock? दोनों में common clock apply किया तो ठीक है. assume J and K, here see unnecessary इतना information दिया. assume JK1 है तो toggle हमको पता है ना ये J and J0 K0 है तो it is no change वाला condition, and both the flip flop have zero propagation delay. Why it is specified non-zero propagation delay? Because see, when it is connected like this, when you apply the clock, the input will come here. So if immediate 0 time पे आएंगे तो then this input will be affected, because the moment you apply the clock, at the same time if the change also happens simultaneously, then instead of this value, the new value may be taken by the flip flop. If you assume the flip flop is not having any delay, to avoid that, what happens, he has not he has specified in this simple way. So this is the simplest question here. So Q1 ले लो, Q0 ले लो. चलो भाई शुरू करते हैं अभी काम. So when you up 0 is waiting here. Okay. When you apply the first clock pulse, just always read any sequential synchronous circuit दिया तो हमेशा analyze from the rightmost flip flop to avoid the confusion. Rightmost flip flop से देखेंगे तो the input here available is 1 1. So when you apply 1 1, what is the output of the flip flop? Toggle. Toggle means complement of the previous. But you have applied here 0 is the existing. Always existing value को लेना चाहिए. 0 is the existing one. So 0 पे what is the output of the D flip flop? It will change to 0. Now this 1 will go back here, and the input is ready. Next clock pulse you apply it. Next clock pulse में 0 is present. 0 0 means no change. Here what is the input? 1. So it will change to 1. Now this 1 is given back. Now again third clock pulse में what is the input here? 1 1 toggle, and what is the input here? 1. It will change to 1. So it is now third clock pulse is done. Now this 0 will go back. हमेशा make the input ready, apply the next clock pulse. What is the input here? 1. 1 means toggle. ठीक है. Then here what is the input here? 0. 0 means no change. Sorry, 0 means your output will change to 0. Okay, fine. It is repeating the same, you can understand. So 0 1 1 0 के बाद it will give you the same sequence. So 0 yeah, option A.
Option A. Yeah, many people, almost everybody given the same answer. Option A. We can also do by using the table present state, input, next state without any confusion. We can solve that question easily. Chalo, let's move for the next question. This is question also little lengthy वाला question है. Using the flip flop तो नहीं है, ये flip flop जैसा concept use करके solve करना चाहिए. So let's try this question. आप लोग तो ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करके आंसर बताओ. चलो. This is 0. Okay, here v1, v1. Okay, v01, v01. देखो भाई, मेरा v01 होल बार. ओके, v02 ले लो. ओके, v02 whole bar. This is v01. So what is the answer here? v01 into v02. Here v01 bar into v02 bar. What is the answer here? You get v01, v02 plus v01 bar, v02 bar. Again v01 XNOR with v02. Again please don't think इतना लेंदी क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएगा, ये तो PYQ है भाई. ठीक है. So any lengthy question comes here, always it is a PYQ, please remember. ठीक है. चलो. So when the input is 6 sin omega t here, 6 sin omega t. Okay. So when input less than 3, okay, here when you will get here 1, when input is less than 3. Here when will you get? When input is less than 0. Accepted or not? Because ये 0 है तो ये नेगेटिव वाला टर्म इज लेस देन 0 है, तो नेगेटिव वाला टर्म लेस देन 0 है तो उस समय पे मेरा आउटपुट पे 1 आएगा. ठीक है. Here it is permanently fixed to 3. When the input positive is 3 and negative should be less than 3, that is v1 is less than 3, you will be getting the output equal to 1. v1 less than 3 पे. एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं, एक्सनॉर आ रहे हैं. चलो फिर शुरू करते क्वेश्चन. सो शैल आई डू इट इन द नेक्स्ट पेज? तुम जाओ नीचे. I'm very bad at diagrams, so kindly excuse me of the shapes which I am going to draw now. Okay, they are definitely not good, I know. Firstly sine wave ले लो. Please assume this is sine wave. Okay.
Somehow I'm able to manage it to be looking like a sine wave. Okay. So when the sine wave is okay 6 sin omega t equal to 3 होना चाहिए, sin omega t equal to 0.5 or sin phi. Okay, when phi is equal to how much, you get sin theta equal to 0.5, phi equal to pi by 6, that is 30 degrees. Sin 30 तो 0.5 है ना, sin 30 is 0.5 ना, cos 60 and sin 30. Okay, so here 30 degrees पे you get this 30. ठीक है, and assume, okay, don't scale that and all, don't waste your time by scaling it. This is 30 degrees, 120 degrees. Okay, I mean it is not 30, 30 plus t. Right. Chalo, listen. Firstly, I am plotting V01. V01 क्या होता है sir? When input is less than 3, it will be 1. V01 will be 1 when input is less than 3. Input less than 3 है तो it will be 1. बाकी समय पे it will be 0. This is 1 here. It will be 0. Input less than 3, it will be 1. ठीक है, this is the output of, this is your input, this is V0 of 1, that is the first wala. V01 means this one. Okay, input less than 1, you will be getting 1. And the next one I am drawing now. V02 is very simple. V02 तो आसान है. During the positive half it is 0, during the negative half you get 1. Positive half it is 0, negative half it is 1. एग्जाम पे इतना टाइम मिलेगा क्या सर, आप ऐसा सोच रहे हैं राइट? डोंट ड्रॉ द फिगर एंटायरली इन द एग्जाम, यू शुड थिंक ओके, अरे यार ये तो 30 से 120 तक 1 0 होके बाकी तो 1, ये तो पूरा 0 होके इसमें 1. व्हेन दे आर आइडेंटिकल यू गेट 1. सो हाउ मच टाइम दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये वाला पार्ट, बाकी तो दे आर आइडेंटिकल, यू कैन सिंपली से लाइक दैट. ठीक है, ये 180 नहीं 150, बिकॉज ये 30 होना चाहिए ना, 180 माइनस 30 150. ठीक है, 120 डिग्रीज. बस एक्चुअली प्रॉब्लम तो हो गया, प्रॉपर वे पे करने के लिए इतना कर रहा हूँ. व्हाट इज द आउटपुट, दैट इज एक्सओर ऑपरेशन ऑफ बोथ. एक्सओर ऑपरेशन ऑफ बोथ क्या होता है सर? when both are same you get 1, both are zero different you get 0, that is up to this you get 0, and when both are same you get 1. स्टार्टिंग में तो ऑलरेडी डिस्क्लाइमर दिया, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग. ओके,
Right, both are 1 same, you get 1. चलो again 1 and 0 XNOR operation क्या होता है 0 when both are zeros. चलो, so finally listen here, this is the output, this is V02, this is V01 XNOR with V02. ठीक है, so here this part is how much 30 degrees, this part is 30 degrees overall. For in the total 360 degrees में for 60 degrees the output is equal to 0, for 300 degrees your output is equal to 1. Now examiner, if you take examiner part into the consideration with respect to what is that, the fraction of time for which he is asking na, in one time period how much time it is, how much time in the one time period, you can see for 1/6 total time by t by 6 times 0, 5t by 6 times it is 1. ठीक है, if you take the total time period इसमें 1/6 part it will be 0, बाकी तो it will be 1. ठीक है, 5 by 6 is the answer. Okay, what is the 5, what is the answer? 5 by 6. 5 by 6 of the total time period it will be 1. So exam पे please don't plot this, इतना करना ही नहीं चाहिए. एग्जाम पे क्या करना, सोचना चाहिए. So if it is given, okay, ये तो blindly यही पे करना चाहिए एग्जाम पे. Okay, in this case you are getting this kind of waveform, you should understand like that. इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें when it is less than 30 it is coming, okay, it is giving some sort of figure like this. Okay, it is less than 30, okay, you are getting 1 for less than 30. This, so you just assume both of them, इस period पे both are ones, इस period में both are zero कहाँ पे हो रहा है, like that direct analysis करके answer दे सकते हैं, but proper understanding के लिए we have plotted everything. Okay, चलो let's move for the next. ठीक है, so both of them I have given. I know in what we call YouTube में whenever some lengthy question comes immediately students will go, ये तो इसमें ट्रेडिशन है, इसलिए जनरली पीपल डोंट कीप लेंथी क्वेश्चंस इन द यूट्यूब वाला क्लास, क्योंकि ज़्यादा टाइम डिस्कस किया तो उतना पेशेंस तो नहीं है, बिकॉज हमारे पास डिविएट होने के लिए बहुत जगह है ना, इमीडिएटली पीपल विल जंप. ठीक है, सो वेन एवर आई डू लेंथी क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे तो बच्चों तो कम होता है इमीडिएटली, बट इट इज इंडीड नीडेड, यू शुड लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, डायरेक्ट अप्रोच तो क्या होता है सर, नेगेटिव हाफ में 180 डिग्रीज इट इज कंडक्टिंग. ठीक है, सिंपल बात, 180 डिग्रीज इट इज कंडक्टिंग एज 1. And here what's happening sir, how much time remain, so that 180 degrees this is also 1, so 180 degrees both are ones, you get 1. when you just check first 180 degrees में this is 0, first 180 degrees में ये कितना time 0 हो रहा है, it is 0 from 30 to 150 it is 0 sir. Okay, that is enough sir, 30 to 150 means 60 degrees में it is different sir, बाकी तो it is same sir, directly देख के answer बोल सकते with enough practice. ठीक है, चलो right, next question, sequential का. Yes, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट 10 सेकेंड्स, इस पे इन्वर्टर लगाओ. It is a basic question on based on the SR flip-flop circuit. Okay, here he has given this as Q.
this as Q bar. So definitely this is S. S and Q are opposite when for the NOR gate, internal circuit of the SR NOR latch. Okay, so here you have given D. You get here D bar, clock, and D. So what is your S? C plus D bar. What is your R? C bar D. ठीक है, here C D ले लो, S and R ले लो, Q ले लो. What is S? C bar D bar. R C bar into D. Okay, because it is a C plus D bar whole bar, C bar into D. So this is 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है. Now listen here, C bar into D bar क्या होता है सर? So why you are taking 0 0 0? नहीं लेना. देखो, here initially 1 0, both zeros, 0 1, तीन cases आया. ठीक है. So first CD 1 0, next CD 0 0, next 0 1. Now tell me what is CD, C bar D bar, C plus D whole bar, C plus D whole bar क्या होता है सर? C plus D is 1, whole bar is 0, 0 plus 0 0 whole bar is 1, 0 plus 1 is 1, whole bar is 0. Next C bar D, C bar D, C bar D. Okay, for SR flip flop when it is 0 0, no change. SR NOR latch. When it is 1 0 1, when it is 0 1, it is again 0. So here the statement of the question, what is that? When the clock is changing from 1 to 0, clock changes from 1 to 0, उस समय पे मेरा output changes to 1. So Q goes to 1 at the clock transition. Q goes to 1 at the clock transition. Q goes to 0, गलत. Q goes to 1, Q goes to 0, गलत. So option ये C में एक आंसर हो सकते. And stays at, and it stays at 1, nahi, and it goes to 0 when D becomes 1. When D becomes 1, it will become again 0. So and Q goes to 1 at the clock transition, and it goes to 0, it goes to, yeah, clue, 1 minute. Q goes to 1 at the clock transition, and it goes to 0 when D goes to 1. Option C is the right answer. ओके, सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनालाइज किया तो कंफ्यूजन से एंड हो जाएगा. एक सिस्टमेटिक वे पे आपने एनालाइज किया तो देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी. यही पे मैंने सिस्टमेटिक वे पे एनालाइज किया ना, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, देन देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी. एक गलत किया तो हो जाएगा. यही पे क्यू नीचे दिया, क्यू बार ऊपर दिया. ठीक है, एस आर पे क्यू एंड एस मस्ट बी उल्टा होना चाहिए. सो बिकॉज एस आर नॉर लैच इंटरनल सर्क्यूट के हिसाब से Q and this must be उल्टा होना चाहिए. यही पे Q है तो यही पे S लेके प्रॉब्लम किया तो 100% आंसर मिलेगा, नहीं है तो डेफिनेटली गलत आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलो, गुड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया. 2018 का क्वेश्चन है ये, बट मैं तो I kept it. It is based on the D flip flop. चलो, YouTube में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन से डिस्कस करना, क्योंकि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है तो बच्चों तो फील दे आर, यू पीपल आर फीलिंग बोर. बट प्लीज ट्राई, इट्स अ गुड क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन, 2 more क्वेश्चंस किया तो आधा समय तो हो जाए. आप लोगों के लिए 31 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए 31 क्वेश्चंस है. 31 क्वेश्चंस तक इलेक्ट्रिकल बच्चों का है. क्वेश्चन नंबर 18, इसके अलावा 13 क्वेश्चंस आर देयर.
चलो, in the circuit shown in the figure, positive edge trick. First, understand the question, which is very important. ठीक है. I'm just copying this because this is one way to copy from this page to next page in the app. ठीक है. Let's go to the next page. Okay, chalo. See here, read the question first. Okay, I just copied the figure in a proper way such that थोड़ा सा proper सोच सकते हैं आप लोग, ठीक है? And here the proper in the circuit shown in the figure, positive edge triggered D flip flop is used for sampling the input DN. आपके इनपुट जो है ना इसको सैम्पल करने के लिए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड यूजिंग द क्लॉक CK is my clock. XOR gate outputs are 3.3 and for the logic high when output is 1 it is 3.3, when output is 0 it is 0 volts. ठीक है. So for the logic low, so the data bit and the clock periods are equal. Okay, so data bit also repeat after every time t and clock also having, but it is shifted, so but the data delta t, so यही पे I am changing the data, यही पे आई एम चेंजिंग द डाटा. कितना टाइम के बाद चेंज कर रहा है सर? 0.15 t. सो डेल्टा t बाय टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू 0.15, दैट इज गिवन बाय एग्जामिनर. ठीक है. सो यही पे डाटा इज गिवन, सो that data may be something same as previous value or new value, it depends on the data you have selected. आप जो data select करते हैं ना, according to that it may be a very new value, it may be the same value or the previous value. If the probability of the input data bit transition at each clock period is 0.3, so यही पे the value of the input may be same or different, it is having how much probability? 0.3. It is it can be different with a probability of 0.3, that is if previously 0, next can be 1 with a probability of 0.3, next can be same as 0 with a probability of 0.7. That is if you take 10 clock pulses, 3 clock pulses में it will be different compared to the previous one, and 7 clock pulses में it will be same as the previous one. ठीक है. Then what is the question? The average value of the voltage accurate to 2 decimals of the voltage at the node X. यही पे voltage कितना हो सकते हैं. ठीक है. चलो let's see here. Okay, see here. Here you are applying the DN. Sorry. X equal to Q
XOR with DN. Okay, listen. Here, now, you see here this part. ये वाला पार्ट ले लो, ध्यान से देखो. Listen carefully. देखो. ये वाला part पे what happens at the positive edge? See here, data is given here. At this positive edge, the data, whatever the present data will come here, and Q and D are same. So during this period, whatever input may at the positive edge, input will be coming here. The same, both of them are same. XOR gate का output क्या होता है? When both are same, XOR gate का output तो zero हो जाएगा. XOR gate का output is zero. ठीक है, XOR गेट का आउटपुट इज 0. सो इस समय पे क्या होता है सर, इस समय पे बिकॉज द क्लॉक इज नॉट प्रेजेंट, इवन इनपुट चेंजेस, Q विल नॉट चेंज. सो Q एंड इनपुट आर डिफरेंट हो सकते हैं. आउटपुट ऑफ द XOR गेट विल बी 1. This happens if this value and this value are different. If they are same, there will not, it will be 0 only. Please understand my concept, guys. At the positive edge, this input will be coming here, input will be coming here. So input and Q are same, XOR gate का output तो 0 हो जाएगा. So at this point, if input is changed to new value, that does not come to the Q because the edge is not happened up to the next edge. So D and Q will be different, output can be 1. So ये वाला period जो है ना, ये वाला period, ये वाला period पे कितना टाइम सर, ये 0.85t, ये कितना 0.5t. ये वाला पीरियड पे हम 100% इट विल बी 0. सो हियर व्हाट इज द कंडीशन, इट इज आउटपुट इक्वल टू 1 with probability of, what is the probability given by examiner, what is the probability of the transition, what is the probability of the transition is 0.3. The probability is equal to 0.3, and here this is 3.3 volts. Okay, output equal to 1, that is 3.3 volts. Now examiner question is to find the average value. What is the x average? Here is area over one time period by time period, area in t by t. What is the area in the time period? Here is, what is the total time period is t. t पे ए पार्ट पे 0, ए पार्ट पे विड्थ कितना 0.85t एंड हाइट कितना 3.3. सो 3.3 इंटू 0.85 into t with a probability of 0.3. Why 0.3 sir? Because if you take simple, another way is if you take 10 clock pulses, 3 clock pulses में you get 1, 7 clock pulses में you get 0. ठीक है, so 7 by 10 is n way. Simply you can write 3 clock pulses. ठीक है, 0.3. So t cancels here, 0.8415 is the answer. ठीक है, ठीक है. Everybody able to understand? Can I proceed to the next question? एक दो क्वेश्चंस तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन. हर क्वेश्चन आसान है तो क्या फर्क होता है आपको. ठीक है, चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया, 19 अभी किया तो आप लोग तो जाएगा, सो थोड़ा सा बाद में करता हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट. नाउ द नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस what we call sequential circuits is timing calculation wala questions. They can also come in your exam. Timing calculation wala questions can easily come in your examination. So they have appeared in exam earlier also. That is setup time, hold time, based on that questions can appear. So this is one sort of that question. You can see a digital circuit shown in the figure, flip-flop having setup time of 5 nanoseconds, worst case delay of 15 nanoseconds. ठीक है, AND gate is having a delay of 5 nanoseconds. Okay,
सो एंड गेट का 5 नैनो सेकेंड्स है भाई. सेटअप टाइम एंड इसका डिले कितना, फ्लिप फ्लॉप का डिले कितना, 15 nanoseconds. Setup time is how much? 5 nanoseconds. What is the maximum clock rate possible? What is the maximum frequency at which you can operate this system? Timer जी आओ, चलो शुरू कर रहा हूँ टाइमर. ट्राई कर लो. इसमें the circuit synchronous asynchronous accordingly you should do the question. चलो, thank you. 1 minute. I'll give you the hint. Whenever you want to do the synchronous circuit questions, synchronous circuit के questions आप लोग करना चाहिए तो ये काम कर लो. डिले वाला कैलकुलेशन पे हमेशा रिमेंबर लाइक दिस. नाउ आउटपुट इज रेडी. नेक्स्ट आउटपुट रेडी होने के लिए कितना टाइम लगेगा? आर नाउ इनपुट इज रेडी. To get the next input ready, how much time lagega? Like that, you take one point, clock to clock, input to input, output to output. Take one point. Say now, for example, I have applied the input. What is the process? Setup time. Then we apply the clock. Then propagation delay. Then again to get the input, you will be going through some logic circuit, combinational circuit, AND gate, and you will get the input. This finish the cycle. The same way. For example, you start from output. Once you have given something, your output came. After that, what is the process? It requires some time to get the input ready. Input ready होने के बाद propagate setup time, then give the clock, propagation delay. नहीं तो clock दे रहा है ना, उस समय से शुरू करो. When you give the clock, one TPD, then make input ready, then setup time, give the next clock. Clock to clock is the time required, total delay. So time period is always greater than that clock होना चाहिए, frequency 1 by that होना चाहिए. चलो भाई, इतना तो दिया मैंने, यूज करके ट्राई कर लो. So C बोल रहा है, who is that? बेहरा. चलो, time up. I'll do it. Okay. So firstly, I will take from my way of analysis is clock to clock. Clock to clock count किया तो it will become easy. So थोड़ा सा minimize करके, चलो थोड़ा सा space मिल रहा है ना. So first I applied the clock. Then let's take the flip-flop name F1, F2, F3. ठीक है, मैंने clock apply किया. Firstly, listen here. Say this requires, ये दोनों के clock common है ना, F3 और F1 both of them will work together. F3, F1 will work together. ठीक है. So F1 clock is applied. F1, F3 parallelly काम कर रहा है. 15 nanoseconds is the propagation delay. Okay. It will give the output. Then once you get the output na, this output is driving this flip-flop. This output is driving this flip-flop. इसमें it is permanently fixed to 1. No need to worry about the setup time here. SR में 1 नहीं होता है, but he has given, you should take it.
So here it is permanently 1 होता है ना, permanently 1, so no need to worry about the setup time. So once this is ready, I mean at 15 nano, once I apply the clock, already assume previous input is available, my clock is given, so it requires 15 nanoseconds to give this output. Once this output is given na, this is acting like a clock input, this is acting like a clock input to this, so this fellow will come at 30 nanoseconds. So my f2 आदमी आएगा another TPD, so f2 requires another TPD, so that is another 15, total 30 nanoseconds. ठीक है सर. So 30 nanoseconds में एंड गेट पे इनपुट अप्लाइड, 30 nanoseconds में एंड गेट में इनपुट अप्लाइड. दिस एंड गेट आदमी जो है ना, वो तो 5 नैनोसेकंड टाइम ले रहा है टू गिव इनपुट टू दिस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, टू गिव इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप. सो प्लस एंड गेट आदमी जो है ना, इसको लिए 5 नैनोसेकंड्स, सो 35 नैनोसेकंड्स. एंड इसके बाद ये इनपुट देने के बाद वी शुड वेट फॉर सेटअप टाइम टू गिव द नेक्स्ट क्लॉक पल्स. सो सेटअप टाइम क्या है भाई, सेटअप टाइम क्या है, दिया नहीं दिया, दिया. सेटअप टाइम कितना दिया, 5 नैनोसेकंड्स. सो वेट, सेटअप टाइम इज, आप इनपुट देने के बाद फ्लिप फ्लॉप तैयार होने के लिए थोड़ा सा टाइम हम वेट करके काम शुरू करना चाहिए. सो इसको बोलते हैं सेटअप टाइम. ठीक है. सो कितना, 5 नैनोसेकंड्स. देन आई कैन गिव द नेक्स्ट क्लॉक पल्स. ठीक है. सो टोटल हाउ मच टाइम इज गिवन, 40 नैनोसेकंड्स. सो यहीं पे शुरू किया जर्नी, यहीं पे एंड हो गया. सो ये दोनों को बीच में कितना टाइम लग रहा है भाई मेरे को, 40 नैनोसेकंड. सो वंस यू अप्लाई द क्लॉक, टू अप्लाई द नेक्स्ट क्लॉक पल्स you should wait minimum 40 nanoseconds. So my time period of the clock must be greater than 40 nanoseconds. Frequency of the clock should be less than 1 by 40 nanoseconds, that is 25 megahertz होना चाहिए. बस. ठीक है. थोड़ा सा फास्टली क्विकली आई विल रिपीट द थिंग्स. सो सपोज यू एज्यूम ऑल द इनपुट्स आर रेडी. मैं तो इनपुट क्लॉक तो अप्लाई किया, क्लॉक अप्लाई किया तो F1 F3 दोनों एक ही बार चेंज हो जाएगा. इसके लिए 15 नैनोसेकंड टाइम लगेगा. इसके बाद दिस F1 is giving as clock input to the F2, it will take another 15 nanoseconds to give its output. So पूरा कितना टाइम लग रहा है, 30 नैनोसेकंड. 30 नैनोसेकंड्स में एंड गेट को इनपुट जा रहा है, इट विल टेक 5 नैनोसेकंड्स ऑफ टाइम. 35 पे इस फ्लिप फ्लॉप को इनपुट आ रहा है. इनपुट आने के बाद हम थोड़ा सा टाइम वेट करना चाहिए, इस टाइम को बोलते हैं सेटअप टाइम. सो 35 प्लस अनदर 5 नैनोसेकंड्स वेट किया तो 40 नैनोसेकंड्स में योर इनपुट इज रेडी एंड फ्लिप फ्लॉप इज रेडी एंड यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्लॉक पल्स. सो एक क्लॉक को दूसरा क्लॉक के बीच में 40 नैनोसेकंड्स कम से कम टाइम होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1 by 40. दैट्स ऑल. 25 मेगाहर्ट्ज. चलो, shall we proceed for the next question? So this is the question based on registers. ठीक है. Question number 21. 10 क्वेश्चन बाकी है भाई. चलो 10 क्वेश्चन बाकी है. रजिस्टर्स का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई. In the circuit shown in the figure, A is a parallel input, parallel output register है भाई. Try this. इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया ना,
This is the most common question asked by electrical engineering students whenever I start doing the questions of the digital circuit. अरे सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिकल पे, इलेक्ट्रिकल सिलेबस में ये है वो है नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई. Sequential circuits and data converters, combinational circuits, तीनों part common for all you for the you people and IEC people together. Level of questions may vary one or two, but it is not, we cannot say, I cannot say that they don't give this much tough questions for you, this much easy questions for you. It's purely your luck. ठीक है, according to your syllabus this is part of yours only. ठीक है, circuit shown in the figure, ये is a parallel input parallel output. ठीक है, एग्जाम के अभी तक आप you have not studied this kind of questions, don't worry, just before exam think whatever you study it is enough. ठीक है, सो मेरा इंटेंशन तो ये नहीं एग्जाम के 2 दिन के पहले और 1 दिन के पहले ऐसा मत करना चाहिए. लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिखा के, डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिखा के, आई डोंट वांट टू मेक यू वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन. डोंट वरी यार, अभी तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो हो गया, जितना भी आप प्रिपेयर किया उतना तो आ सकते एग्जाम पे, ऐसा ही सोच लो. ठीक है, बट व्हेन आई डू द क्वेश्चन लर्न द कॉन्सेप्ट इफ यू डोंट नो दैट, दैट्स ऑल. ठीक है, सो इन द सर्क्यूट, बट ईसी वाला बच्चों को कोई एक्सक्यूज नहीं भाई. ईसी वाला बच्चों को दिस सब्जेक्ट में जितना भी डिफिकल्ट है तो उतना डिफिकल्ट दे सकते, दे दिया भी. 2017-18 वगैरह वाले पेपर में बहुत टफ क्वेश्चंस डिजिटल से ही आया, बट 2-3 साल से ऐसा हो रहा है आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं. एनीथिंग इज पॉसिबल. चलो, इन द सर्क्यूट शोन इन द फिगर, a parallel input parallel output 4-bit register which loads at the raising edge of the clock is the input lines are connected to the 4-bit bus. Here also same thing yaar, if you read the question it is not at all difficult. Okay, if the output acts as the input, ये वाला आउटपुट जो है ना ये इसको इनपुट जैसा काम कर रहा है. ओके, इज whose output is acts as a ROM, whose output is floating when enable input is 0, but enable input is 1 दिया ना, no need to worry about it. So when ROM का address में यहीं पे ये दिया, so a partial table of the ROM address and data is given by examiner. The clock to the register is shown. ठीक है, the data on the W bus at the time of T1 is, suppose initially here you have 0110, at T2 what is the data you will be getting is the question. चलो, so here don't confuse or don't worry by seeing the question, size of the question. Many people don't like to read the question also. ऐसा question आएगा तो आप ऐसा mindset पे नहीं होना चाहिए. You हमेशा आप open होना चाहिए and be what we call calm and ऐसा होना चाहिए cool relaxed way पे. So initial value कितना दिया? 0110. So 0110 यहीं पे है. फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करो, पॉजिटिव एज ऑफ द फर्स्ट क्लॉक पल्स, ये वाला पिपो जो है ना, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये यही से यही को देता है. ठीक है, देन रॉम का एड्रेस है ये, एड्रेस 6 में डेटा क्या 1010 विल कम आउट. सो ये वाला 6 लेके 1010 आया, हो गया काम. फर्स्ट क्लॉक पल्स में ये काम हो गया. नाउ ये 1010, ये 1010 जो है ना यहीं पे आएगा फिर 1010. देन व्हेन आई अप्लाई द सेकंड क्लॉक पल्स, that 1010 will be replaced here. 1010 is the address, 1010 means 10th address में data जो है ना 1000, that will come to the content of the ROM. It is not working with clock, it's a combinational circuit. Now 1000 will come here. He asked only up to T2, there is no other clock in between T1 and T2. So what is the answer is option C. How many gave you option C? 2 people दिया, 3 people दिया. ठीक है, ठीक है. चलो, let's go for the next question. Question number 22. Last 10 questions for electrical engineering students. Electrical वाला बच्चों के लिए last 10 questions. So read this question. चलो, read this question.
चलो, what is the answer here? It's a question of network analysis and this one together, network analysis and the counters together. 30 सेकंड टाइम चाहिए तो ले लो. Right. 6.69. You have a 3-bit binary counter shown in the figure. The output increments at every positive transition. Up counter बोल सकते. Counters का question है. The clock. Assume ideal diodes and the starting state of the counter is all zeros. If the output has 1 volt output, if the output is high, output is 1 volt, output low 0. Current in milliampere flowing through the 50 ohm resistor is when fifth clock pulse. So fifth clock pulse में what do you get here? 1 0 1. ठीक है. 0 1 means forward bias, 0 means you are giving the ground and it will be forward biased and this will be forward biased. ठीक है. So what is the current I? ये तो network question हो गया. So here you have 100 ohms, another 100 ohms and यहीं पे 1 volt, 1 volt and 50 grounded. What is the current I? ठीक है. This is the question. So if you apply Millman's theorem or source transformation, whatever it might be, this will give you 10 milliampere or 1 by 100. Hundred parallel with 100 is 50. Source transformation say so this part can be replaced with 1 by 50. So simply you can say one volt 50 and niche another 50. What is the current is 1 by 100, 10 milliamperes. ठीक है. How I have done? You see the first in 1 volt 100 100 550 and ground. इसको मैं सिंगल सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं. How I can replace it? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओ. 1 by 100 1 by 100 100 parallel with 150. So 2 by 100 and 50 will come parallel. Again source transformation apply किया तो 2 by 100 into 50 is 100 by 100, 1 volt series with 50. So keep this source and 50, 1 by 100, 10 milliampere is the answer. ठीक है. चलो next. कुछ नहीं specify कि here it is specified ना. counter starts from 0. So first clock pulse में 1, fifth clock pulse में 5. ठीक है. 1 0 1. Next. Again some good question for you. Try this. Electrical बच्चों भी try करना चाहिए. There is no excuse. Electrical बच्चों भी try करना चाहिए. There is no excuse. Please try. Last 1 sec.
कैन हो गया। ये क्वेश्चन तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हियर v1 इज 2 sin 0.1 pi t plus 1, v2 4 sin 0.1 pi t। okay, when v2 is greater than v1 you will get output equal to 1। v2 v1 से ज्यादा होना चाहिए। when will you get v2 greater than v1? 4 sin 0.1 pi t should be greater than 2 sin 0.1 pi t plus 1, then output will be 1। okay, then v2 greater than v1 you get output equal to 1। okay, so 2 sin 0.1 pi t should be greater than, ये उस तरफ ले लो, then it implies sin 0.1 pi t must be greater than 0.5, which implies 0.1 pi t must be greater than pi by 6, because sin 0.5 is 30 degrees na? So pi cancel, t must be greater than 1 by 0.6, 1.67, ठीक है। 1 by 0.6 कैलकुलेट करो, 1.67, ठीक है। चलो लेट्स मूव, लिसन हियर। हियर आप लोग बताओ व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इक्वल टू 0.1 pi, then what is the time period? 2 pi by omega, that is 2 pi by 0.1 pi will give me 20। so half time period कितना? 10। why half time period is calculated? because examiner का question देखो, ये input दिया तो the output op amp and clock acts as the input to the end and the counter is positive। what is the output of the counter is cleared initially, what is the output of y2 y1 at 10 seconds? so 10 seconds is half time period, half time period, ठीक है। now first let's plot 4 sin 0.1 pi t। this is 4, this is my v2, ठीक है, this is 10। now what about 1 plus 2 sin 0.1 pi t? what is 1 plus 2 sin 0.1 pi t? that is it is starting from, it will be 1 plus 2 will be 3 na? it will be like this। okay, this is 1 plus 2 sin 0.1 pi t, that is your v1, ठीक है। this is 1 2, 1 plus 2 कितना? 3, 3 is its peak value, minimum value तो 1, okay।
it is shifted by 1. That is how this one. Okay. Now from this point to this point, okay, and this point to this point, here this is 1.67, this is 8.33, because this width should be same na. So here to here V2 is greater than V. Why 1.67? Already I have calculated here. Okay. So if you take the scale signal given by examiner, it is like this na. It is 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So what is that? Between 1.67 to 8.33. At the every positive edge, what is the counter output? Count will become first 1, next edge may 2, next edge may 3, next edge may 4. That's all. So between 1.67 to 8.33, how many counts it is counting? 4 counts. So what is the answer? 100. Okay. Another lengthy question. Oh, this time you people didn't went. So any doubt, please ask me. कोई doubt नहीं है तो I can leave this part and I will move to the next question. चलो नेक्स्ट. अरे यार 8.3 कैसा? ये साइन वेव है ना, ये तो 1.67 है, तो ये 10 है, तो ये एक पॉइंट ऑफ एक्सकर्शन है, दोनों पॉइंट्स जब भी मीट हो रहे हैं सिमेट्रिक हियर, ये पार्ट एंड ये पार्ट सिमेट्रिक है. ये 1.67 है तो ये भी 1.67 होना चाहिए. ये 10 है ना, 1.67 सब्ट्रैक्ट करो, 8.33 आएगा. ठीक है, बस. चलो. ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडी? दिस इज एफएसएम वाला क्वेश्चन है. ये तो हम बाद में ईसी बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रिकल वाला बच्चों जाने के बाद वापस डिस्कस करते हैं, इसको छोड़ दो अभी. ठीक है, चलो लेट्स एंटर इनटू द नेक्स्ट चैप्टर. Last chapter for you. ठीक है, data converters. Hardly 6 questions are there. We'll finish and you people can live happily. But इसके पहले EC बच्चों, wait, EC नहीं, इलेक्ट्रिकल बच्चों, ये फ्लिप फ्लॉप वाला क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं. थोड़ा सा, बिकॉज आई वांट टू टेल यू दिस मेथड एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है. एनी सिंक्रोनस सर्क्यूट इज गिवन टू यू, any synchronous circuit is given to you, you can use this concept. इसलिए मैं एक बार और कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को. देखो here D1 equal to Q0, J1 K1 is equal to, both are equal to Q1. Okay, here one more best method to solve this kind of questions is present state what are the inputs given for the flip flops.
say D1, J1, K1. What are the inputs? D1 is Q0, Q1, Q1. What will be the next state? You take this table, हमेशा आपका analysis easy हो जाएगा, ठीक है? So here you see present initially examiner has given initially Q1 is 1. This is the first state given by examiner. So Q0 is 0, Q1 is 1. Here when it is 0, for the D flip flop में 0 दिया तो next state में 0, 1 1 दिया तो next state is toggle. Take this here. What is Q0? 1. What is Q1? D flip flop में 1 दिया तो 1 आएगा and 0 दिया तो JK flip flop will remain no change. It will stay in the previous value. Now take this 1 1. Take this 1 1. Okay. And if you have 2 flip flop, maximum 4 possibilities आएगा. इसके बाद it compulsory repeat हो जाएगा. ठीक है? So 4 state के बाद analysis मत करो. ठीक है? चलो. Let's see here. Okay. Q0 क्या? 1. Q1 क्या? 1. So 1 पे output will be 1. 1 1 दिया तो toggle of previous value 0. So it starts with 1 0. It come back to 1 0. इसका मतलब it is repeating the sequence. Now you take your Q0. Q0 का sequence क्या? Initially 0. इसके बाद it is giving the sequence 1 1 0, 1 1 0. This is the answer. This is the another without confusion answer आने वाला method. This you apply for any synchronous circuit, you will be able to solve it. ठीक है? कोई भी काउंटर वाला क्वेश्चन कोई भी दिया तो एग्जाम पे आसान मेथड है. चलो लेट्स गो फॉर डाटा कन्वर्टर्स. Right. So hardly 6 questions are there. Let's finish it off and you people can leave electrical. As EC वाला बच्चों तो they will stay. We need more energy for EC people. ठीक है? चलो good. So let's try this question here. It's a good question, logical question. Electrical बच्चों के 100% आने के लिए चांस भी है इस क्वेश्चन को. ठीक है? So please try. Give a try. Give a try. Time off. नो आंसर. क्या हुआ यार? एडीसी का क्वेश्चन है, डुअल स्लोप एडीसी. ठीक है? So the simplified block diagram of 10-bit dual slope integrated ADC is shown in the figure. The 10-bit counter at the output is clocked with 1 megahertz. Okay, so the time period is 1 microsecond. First point is clear. Assuming negligible timing overhead, इससे कोई extra time नहीं लग रहा है because of the control circuit, and the maximum frequency of the analog signal that can be converted using ADC is approximately how much? So here firstly, what is the conversion time formula? 2 to the power of n plus 1 into t. So 2 to the power of 11 times t, that is 2 milliseconds approximately. 2048 आएगा, approximately 2 milliseconds ले सकते. ठीक है? So this will be because t is equal to 1 microseconds. ठीक है? 2 milliseconds आया. So the frequency of the sampling or the time period, so it requires 2 milliseconds to get the output. It requires 2 power n plus 1 is the slowest ADC. Dual slope ADC में what is the time required? Integration, de-integration दोनों मिलके 2 power n plus 1 clock pulses it requires. Okay. So
2 milliseconds is the time required. So the sampling time should be greater than 2 milliseconds. That is, once you take the sample, next sample लेने के लिए, once you get the conversion, you can take the next sample. इसके लिए कितना time लगेगा? Minimum 2 milliseconds. So the frequency of the sampling should be less than 1 by 2 milliseconds. That is 500 Hz. Answer 500 तो नहीं है, because the question here is he asked the maximum frequency of analog signal, not sampling signal. Analog signal, sampling signal दोनों अलग है भाई. Analog signal and sampling signal should satisfy the Nyquist criteria. Your FM must be less than Fs by 2, or Fs must be, sampling frequency must be 2 times the original message signal frequency by Nyquist criteria. By using that, your FM should be less than 250, और FA ले लो, कोई दिक्कत नहीं. So analog signal का original signal and sampling signal frequency, they must be minimum 2 times. Then only you can recover the signal, is the Nyquist criteria. By using that, what is the message signal frequency required here is 250 Hz. चलो, let's move further. This is a easy question, just a matching वाला question है. आप लोग तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से. n plus 1 2 power n minus 1 is counter type ADC. Here dual slope ADC. Yes or no? For ये क्या बोलते हैं, flash type ADC, no clock pulses. Successive approximation type register, it is n clock pulses. ये तो आसान क्वेश्चन है. चलो, डाटा सेलेक्टर तो मक्स होता है. सीरियल एडर इज ए सीक्वेंशियल सर्क्यूट. ठीक है. स्विच टेल काउंटर इज जॉनसन काउंटर बोलते हैं. ओके. ट्विस्टेड रिंग काउंटर, स्विच टेल काउंटर सेम. फास्टेस्ट एडीसी इज फ्लैश टाइप एडीसी. ठीक है. सो द डाटा सेलेक्टर इज मक्स. फर्स्ट ऑप्शन 3. serial adder is sequential circuit na 4, and switch tail, first option is also a combinational circuit, don't worry about it. 3. Second option is 4, and switch tail counter is twisted ring counter 3 4 6, and fastest ADC is flash 3 4 6 1. चलो next. Which of the following is not correct? If everything else is equal, then a 10-bit digital ramp ADC will have a better resolution. But chalo, try this question. Which of the following statement is not correct? If everything else is equal, then a 10-bit digital ramp ADC will have better resolution. Galat. Conversion time of SAR type increases with increase in the input voltage. It is uniform conversion time. Flash time ADC does not contain DAC. Correct. VCU. So option C is the correct. Because flash type ADC may you have some digital circuit like encoder to do this job. So here one more question based on the quantization error. So 3 more questions. Electrical बच्चों get ready to leave. ठीक है. 3 more questions है आपके लिए. Then ECE बच्चों हम लोग तो डिस्कस कर सकते हैं.
Just close and open the video, Kumari. Then you can continue live. ठीक है, what is the answer? बाकी लोग D दिया. Okay. Quantization is generally equal to step size. Depends on the system. Sometimes half step size भी हो सकते हैं. Okay, quantization error can be depends. So here 8-bit DAC. What is the step size? 1.275 by 2 to the power of 8 minus 1. 1.275 by 255. ठीक है. That will give me 5 millivolt. ठीक है. So that is the step size. So what is the quantization error? You can do it. So here actually there are two different ways to answer this. The most frequently used is plus or minus half LSB. We can add it. That is plus or minus 2.5 millivolts. But depends on the design. Sometimes this can also be your answer. Sometimes because there are some circuits. Suppose counter type ADC is there. In counter type ADC, what we call, if you don't have any error correction network, then it can take the quantization error as 5 millivolts. 1 LSB भी ले सकते हैं. ठीक है. बट दोनों प्लस आर माइनस दिया ना, सो मोस्टली इट इज प्लस आर माइनस हाफ LSB इज द अप्रोप्रिएट आंसर इन दैट केस. ओके, बट एक्चुअली ट्रूली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोथ कैन बी पॉसिबल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 30 सेकंड पे नहीं हो पाएगा. 1 मिनट ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ट्राई करो. What is the answer? 29. Chalo, you have a 8-bit ADC. 2's complement output has the range of minus 2. What is the V range? Here V range equal to 4 volts. Then it generates a digital code of 00 and the analog range of, what is the step size here? You should take V range by 2 power n minus 1. You get the same similar value, but he has given one step na. So step diya na, so step size you should calculate from this. 7.8125 minus 7.8125, that will give you 15.6250 millivolts. ठीक है. If the input is minus 0.12.15, what is the it produces a digital output. Output is in 2's complement. Okay, chalo. So minus 7.8125 to 7.8125. My output is 00. ठीक है sir. Then 7.8125. Can I say like this? This is 0.5 step size. Yes or no? Right, minus 0.5 step size to plus 0.5 step size. Now see here. So 0.5
step size to 1.5 step size. What is the answer? 0, 1. So minus 0.5 to plus 0.5, 0. Similarly, 0.5 to 1.5, it will give you next answer. 1.5 step size to 2.5 step size. What is the answer? 2 it will give. In the negative side, minus 0.5 step size to minus 1.5 step size, it will give me minus 1. Minus 1.5 step size to minus 2.5 step size, it will give me minus 2, and it will grow negatively like this, positively grow like this. Okay, so this is how the output is generated here. 2's negative number to 2's complement में मिलेगा. Now my input is equal to 1.5 minus, so step size is equal to 15.625. so the number of steps, if you want to write input in terms of step size, if you want to write input in terms of step size, calculate the number of steps by using the formula minus 1.5 by 15.625. That will give me minus 96. Minus 96. Okay, calculation करके check करो. So this is a minus 1.5 can be written as minus 96 step size. You know, here minus 0.5 to minus 1.5, what is the answer? 1. Similarly, minus 95 point or (96.5) to step size to minus 97 point step size. What is the answer it will give you is minus 96. So for minus 96 steps, which is in between this, it will also give you minus 96 as the output. Now what is plus 96 in the binary? It is 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. What is minus 96? Iska 2's complement 1, 1, 0, 1, 0. This is its 2's complement. A0 hexadecimal is that. Okay? Use the information properly and use your common sense, you will be able to answer it. Is it fine? Everybody here? थर्टियथ भी सेम कॉपी हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So question तो हो गया. A0 hexadecimal is the answer. So use the information given, analyze the question, you will be able to solve it easily. चलो next वाला question. For the 4-bit DS is shown in the figure, the output voltage V0 is. ये तो आसान question है. This is a DAC वाला question. Okay. R2R DAC वाला question. कम समय पे सॉल्व करो. Try it. Option B, right answer. What is the process here? Easiest step is 1 plus R2 by R1 into 1 by 2, 0 by 4, 1 by 8, 0 by 16. Eight into
1/2 plus 1/8. Fine. That's okay. This voltage by 2, by 4, by 8, by 16, and so on. Arc to arc ladder wala circuit. There might be some twisters based on input is given to negative terminal, positive terminal, but according to the question, we should do the solution. I hope we are done. Yes. इलेक्ट्रिकल बच्चों बाय बाय. ठीक है, आप लोग तो जा सकते हैं, आपका टाइम दे दिया. ठीक है, बिफोर 5 PM आई एम लीविंग यू पीपल. ठीक है, सो ईसी वाला बच्चों तो वेट कर लो, इलेक्ट्रिकल बच्चों तो जा सकते भाई, ईसी बच्चों तो वेट करना. ऑल द बेस्ट इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स. ईसी वाला बच्चों तो वेट कर लो. सो द न्यू टॉपिक नंबर सिस्टम. ठीक है, ओनली फॉर ईसी. इलेक्ट्रिकल बच्चों तो नहीं आना चाहिए. ठीक है, चलो बाय बाय. बाय बाय, थैंक यू, सी यू ऑल द बेस्ट. 2 दिन है एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करो. टेक सफिशिएंट रेस्ट, डोंट बी एंग्जियस, डोंट थिंक मच, ओवर थिंकिंग सभी छोड़ के हम आराम से लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है. चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. राइट, इसी बच्चों ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मेरे पास, 9 क्वेश्चंस है, फटाफट फास्टली वी विल कंप्लीट इट एंड वी कैन लीव. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम, फाइंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम हियर. आप लोगों को डिजिटल मत से आसान से मत लेना, एक दो लेंदी क्वेश्चंस भी करेगा मैंने. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, डेफिनेटली इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू. सो ईसी बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिजिटल को ओके, डोंट टेक इट लाइट, कंपल्सरी यू शुड प्रिपेयर प्रॉपरली. राइट, सो प्लीज गो थ्रू इट. So what is the base of the number system? Come on, B. B nahi yaar. So here, are 5B plus 4 equal to R, sorry, the B is the base now, B plus 3 into 4. This is in the, I have converted by multiplying its positional value, I have converted into decimal equivalent. 5B plus 4 equal to 4B plus 12, B equal to 8. ठीक है, आपको क्वेश्चन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंपलसरी फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन तो आ सकते हैं. अभी तक सीओ से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा. दे कैन आस्क यू फ्रॉम सीओ आल्सो, सो मे बी वन क्वेश्चन कैन कम, सो इट डिपेंड्स. अभी तक तो नहीं आया. if your luck is good, they may not ask this time also, but they have included that in your syllabus. In the last 2 years they are not asking 21 से, but they can ask you. So floating fixed point representation topic तो मत छोड़ना, मैं तो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया. So question number 33, again simple question, simple सी question. So please try, please give a try. The greatest negative number which can be stored in a computer who's having 8-bit word length using 2's complement arithmetic. What is the answer?
1 0 0 0 0 0 0 0. This is the answer. So minus 2 power 7, that is minus 128. ठीक है. Next question. Read this. Which of the following represents overflow? MSQ. MSQ. Overflow is represented by x bar, y bar, z plus x, y, z bar. Two positive numbers negative giving, two negative numbers giving positive. So this one. And also when the carry out of the MSB and the carry input are not, or MSB and the carry out of the MSB are not same, it means, for example, your output is Cn minus 1, Cn minus 2, Cn minus 3 and so on, and you have got C naught. If they are different, what is the meaning? It is having some information. So when you do XOR, if it gives 1, it indicates there is carrying, there is overflow. So overflow is when the result is more than the range, we call it as overflow. That occurs for these two cases. Chalo, let's move for the next question. So let's do the question on the Boolean algebra. Try this. Okay. You need to solve this question by using SOP and POS. So, for example, if you solve by SOP, firstly, what is the least count of quad? Least count of quad is least count of minterm is n variables. Okay. Then pair is min or max, दोनों का. Pair is n minus 1, quad n minus 2, octat n minus 3. N is here 4 because it is a 4 variable function. So if you take SOP में you should cover all the ones is your criteria. So मैं तो सारे ones को cover करना चाहिए. ठीक है, this is सारे ones तो यही पे cover हो गया. ये pair हो गया. I can take a pairs. So in SOP, what is the condition? 2 pairs, 1 quad. All ones are covered, na? So 2 pairs ka, what is the literal count? 2 into, what is the literal count? N minus 1 means 3. 1 quad, 1 into, what is the literal count? N minus 2, 2. That will give me 6 plus 2, 8. For POS, what is the literal count? POS के लिए all zeros must be completed. So all zeros के लिए you can take one quad here.
one pair here, one pair here, and one quad here. So POS में how many pairs? दो pair, दो quad. So 2 into 3, 2 into 2, 6 plus 4 10 आ रहा है. मैं गलत किया. 8 और 9 आना. All zeros must be covered ना. एक मिनट. कहाँ पे गलत हो गया यार. एक मिनट प्लीज. 1 1 का क्वाड हो जाएगा. नहीं हो जाए. पहले पेड़ को हटा दो. ओके. एसओपी तो हो गया. पीओएस के लिए देख रहा हूँ. अच्छा. यस. दिस इज ए क्वाड. दिस इज ए क्वाड. ठीक है. वन पेयर, 3 क्वाड. पेयर का 1 into 3, 3 quad, 3 twos, 6 and 3 total 9. So 9 comma 8 is the answer. LC is the literal count. Literal count is the number of literals in the expression. Number of variables either in the normal or complement. Yes. Chalo, let's go for the next. So this is also based on the Boolean algebra. Read this question carefully, okay, and try to answer this. Right. Please read. There are 4 Boolean expressions, Boolean variables. It's a good logical question. There were 4 Boolean variables x1 to x2, x3, x4. The following functions are defined. F of x3, x2, x1 is sum of the min terms 3, 4, 5. It's a good question. Yeah, please try. G of x4, x3, x2, sum of the min terms 1, 6, 7. Find FG.
Try. So please try. Last 2, 3, 4 questions are there. Option C बोल रहा है, ठीक है. Firstly, here all variables are not given. Here x4, x3, x2, x1, all the variables are there. So see here, x4, x3, x2, x1 ले लिया तो for f, okay, otherwise इतना करना क्यों, ठीक है. x4 पे you can keep 0 or 1. Then what is f of x4, x3, x2, x1? When it is 3, 0, 1, 1, you keep 0 in at the place of x4 and 1 also. So you get 3, 4, 5, and also you get, if you keep 1, 0, 1, 1, 0, 1, it will be 11, 12, 13. Do you understand what I am doing? Here he has given in terms of x3, x2, x1. x4 is not specified, it can be 0 or 1. So x3, x2, x1 3 hai to, x4 0 hai to you get 3, x4 1 hai to you get 11, like that. So here also, what is g of x4, x3, x2, x1, sum of them in terms 1. Okay, here 1 is 0, 0, 1. Na? Here x1 can be 0 or 1. Here 1, 1, 0. x1 can be 0 or 1. 1, 1, 1. x1 can be 0 or 1. So in that case you get, what are they? 2, 3, 9, 8, 14, 15. Now what is f into g means? Take the common between them. What are the common min terms? 2 नहीं, 3 तो है, केवल 3 है. अरे यार, only 3 आ रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होना. 1 minute, 6 तो गलत है. ओके, 6 तो गलत. सो 12 and 13 are there. So 3, 12, 13. कॉमन वाला टर्म. सो लास्ट 4 क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन को लास्ट पे कर सकते. पहले लॉजिक फैमिलीज खत्म करता हूँ, ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? आई विल डू दैट क्वेश्चन. This is a simple question from logic families. You can do it.
चलो, here simple सी बात, when they are in parallel, add them, series multiply. So a plus b into c whole bar ले लो, a plus b whole bar plus c bar, that is a bar b bar plus c bar. Next question. Try this. Last two questions. So the sink current of the TTL NAND gate means how much this circuit can take, okay, is given by 16 milliampere, okay, and the input capacitance of the CMOS is 10 picofarad. The minimum pull-up resistance, pull-up time constant is, so here what is the capacitance connected is 10 picofarad. So time constant is Rp into 10 picofarad, but here Rp should be selected like that, 12 by Rp should be less than 16 milliamperes, okay, Rp should be greater than 12 by 16 milliampere, that is 750 ohms. So tau equal to 750 into 10 into 10 power minus 12, that is 7.5 nanoseconds. ठीक है? So because here it can take maximum से maximum इतना current ही ले सकते, so the resistor should limit the current should be not more than that particular value. Last question. Try this. I hope it revises your entire syllabus. So the logic gate shown in the digital circuit below use strong pull down. That is when NMOS transistors are low, the logic levels to the outputs. The pull down are off, high value resistors, the output. That is pull up or weak. What is this strong and high, weak? Strong means when it is 0, exact 0 volts aayega. Weak means when it is 5 volts, the output is 1. You don't get 5, there will be some drop in the resistor and you get after drop the remaining value. Okay. So note that the nodes are intentional. Actually, this part is of no use in the question. Note that the nodes are intentionally shorted in a wired logic such that shorted wires will be high only when the output of all are wide. इसका मतलब this wired part will act like a AND gate. Wired part will act like a AND gate. ठीक है? So they are intentionally shorted. So when all are high, then only high. So the number of distinct value of x3, x2, x1, s0 out of the 16 possible values, the y equal to 1. So you see here x3 bar, okay, x3 whatever it may be, chhod do. Here what do you get? Some x3 into this value whatever it may be. So what do you get here? x3 bar x3 into k, but this will be 0 because x3 bar into x3 0 hota hai. So here what will you get? x3 nahi, x0, x0, ठीक है. So x3 आएगा, output y equal to x3. So y equal to
X3. So X3 must be 1. So 1 triple 0 1 0 0 1 1 0 1 0, like that 8 times it is possible to get x3 equal to 1. x3 equal to 1 आने के लिए कितना टाइम पॉसिबल है? 8 टाइम्स इट इज पॉसिबल, 8 कॉम्बिनेशंस. ठीक है, 8 इज द आंसर. ये क्वेश्चन तो करना क्या, or you people can do it. Tell me. I have done this question earlier also in the regular class में किया हम लोग. So चाहिए तो I can do it, नहीं है तो we can leave it. बहुत तो हो गया 3 घंटे से क्लास. So बताओ, चाहिए तो I can do the solution, नहीं है तो we can end the session for today. Respond करो. अगर आप my student है तो definitely you have seen this question. Please comment. If you want I can do, otherwise I will leave the class. No response. Please comment something. चाहिए नहीं चाहिए कुछ comment तो कर लो. Based on that I will take the decision. First comment will be followed automatically. Whoever comments first. ठीक है, कर लो. So consider the numbers present in the 4-bit gray code X, H3, H2, H1, H0. The gray code representation is G3, G2, G1 is the gray code of n plus 1 mod 16. So for example, n equal to 0. What is 0 plus 1 mod 16? 1. When n equal to 1, what is 1 plus 1 mod 16? 2. If n equal to 2, what is 2 plus 1 mod 16? 3. Like that, when n equal to 14, what is 14 plus 1 mod 16? 15. When n equal to 15, what is 15 plus 1 mod 16? 0. Because 16 mod 16. What is the meaning of mod? Mod का मतलब it will give you remainder of the division. It will give you remainder of the division. n equal to 0 में 0 plus 1 mod 16, 1 plus 1 mod 2 plus 1 14, like that 15, n equal to 15 by 15 plus 1, total 16 mod 16, that will give you 0, right? So here what is the question here is H3, H2, H1, H3, H2, H1, H0 use the gray code of n equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ठीक है, ये H3, H2, H1 क्या दे रहा है? ग्रे कोड ऑफ द फर्स्ट 15, 0, 1, 1, 0. It will be 0, 0, 1, 1 is the shortcut. If you have studied my class, you might know this. 4 zeros, 4 ones, then mirror image. Eight zeros, 8 ones. Okay, this is generally how you write the gray code. This is how you write the gray code. Okay. Now G3, G2,
G1 G0 is the gray code of n+1 mod 16 का gray code. This is n का gray code. Okay. What is G3, G2, G1, G0 with respect to n+1 mod 16? Means here 0 is present hai, so we should write the gray code of 1 here. We should write the gray code of 3 here. We should write the gray code of 2 here. We should write the gray code of 6 here. And so on. We should write the gray code of 14 may we should write the gray code of 15, and 15 may we should write the gray code of 0 is the question given by examiner. Now he is asking what is the equation for G3, G2, G1, G0 with respect to H3, H2, H1, H0. Suppose he has given G0 is sum of the minterms 1, 2, 3 bola. Okay, I have not filled it entirely. First few are enough to eliminate the option. For G0, he is saying sum of the minterms 1, 2, 3. But for 2 and 3, what is G0? For 2 and 3, what is G0? For 2 and 3, what is your G0? 0. But examiner is question options में दिया, so गलत. Next, G1. G1 starts from 4 according to examiner. But for us, G1 starts at 1 itself. For 1 itself, you are getting the output 1. So, G1 also wrong. Next, G3. G3 starts from 0, 1. But G3 is 0, 1 पे 0 दिया examiner. So, wrong. G2 is starting 2, 4. So, 2 पे 1 है. बाकी तो you fill and you will understand. So, G2 will be the correct answer. I am repeating. Please see here. See here what is the condition is. Okay, here n+1 mod 16. Okay, so when n is 0, 0 plus 1 is 1. Like that 15 plus 1 is 16 mod 16 will give you 0. So first we should write gray code of n. Here we should write gray code of n+1 mod 16. That is the next number का gray code लिखना. For 15, 15 plus 1 mod 16 is 16 mod 16 0 का gray code लिखना चाहिए. How to write the gray code? Shortcut is like this. First write 0, 1. इसका mirror image. 2 zeros, 2, 1. Take its mirror image. 4 zeros, 4, 1. Take its mirror image. 8 zeros, 8, 1 is the shortcut. नहीं तो normally XOR से करिए तो बहुत time लगेगा. Now examiner is saying what is G3, G2, G1 in terms of H3, H2, H1. So G3 is G0 is 1 for first two cases. Remaining I don't fill it. Go to options. He has given 1 and 2, 3, but 3 पे this is 0. Like that I eliminated the option. G2 is the right answer. ठीक है, चलो मैं तो कर लिया. That's all for today. So 24 के लिए हम तो नया कुछ ला रहे हैं आप लोगों के लिए. Don't miss this opportunity. So this is our rankers this year. New batches are also started, guys. आप लोग तो preparation शुरू करना तो you can start for IRMS, GATE, anything you want to take the subscription. Use my code Shankar10. All the very best. Thank you very much. So you can also join my Telegram channel. This is my Telegram channel also, Shankar10. Thank you. All the best.